Welcome in another episode of Law of Crime. This episode discusses about section 404 of IPC, dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. Whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property, knowing that such property was in possession of a deceased person at the time of that person's decease, and has not since been in the possession of any person legally entitled to such person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine. And if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years. Practice and procedure of this section shall be read as follows. The property is movable property. Such property was in possession of the deceased at the time of his death. Since the death, such property was not in possession of any person. The accused misappropriated it or converted it into his own use. He did so dishonestly. He knew that such property was in possession of a deceased person at the time of the death of such person. Additional ingredient for the last limb of this section: the accused was at the time of the death of the owner a clerk or a servant of the owner. The practice and procedure of this section shall be read as follows. The offense is non-cognizable, bailable, non-compoundable and triable by magistrate of the first class. भारतीय दंड संहिता की धारा 404 मृत व्यक्ति के पास मौजूद संपत्ति को बेईमानी से गबन करने से संबंधित है। इस अपराध में कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी मृत व्यक्ति की उस संपत्ति को हड़प लेता है जो मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, जिसे कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति को मिलना चाहिए था। इस अपराध के लिए सजा 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकती है। यदि वह व्यक्ति मृत व्यक्ति का लिपिक या सेवक था तो सजा 7 साल तक हो सकती है। यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जैसा कि नए कानून में बताया गया है। धारा 404 के मुख्य प्रावधान हैं: अपराध, मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में मौजूद संपत्ति को बेईमानी से हड़पना। सजा: सामान्य व्यक्ति 3 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। लिपिक या सेवक: यदि वो व्यक्ति जो व्यक्ति मरा है उसका यदि वो लिपिक या सेवक रहा है तो उसे 7 साल तक का कारावास एवं जुर्माना दोनों हो सकता है। यह जमानत, यह एक जमानती अपराध है, यानी जमानत मिल सकती है। प्रकृति, यह एक गैर संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, नहीं कर सकती है। This is all about today's episode of section 404 of IPC in the series of Law of Crime.